रॉबिन्स पैथोलॉजी चैप्टर नंबर 1 आज का टॉपिक है ग्रोथ फैक्टर्स एंड रिसेप्टर्स। अब तक इस चैप्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट तो डेवलप कर लिया है कि देयर इज सिग्नल ट्रांसडक्शन व्हिच वर्क्स इन अ वे कि इफ देयर इज अ सेल इट कंटेन्स ऑब्वियसली रिसेप्टर्स आइदर ऑन द मेम्ब्रेन or there are some intracellular receptors and some protein molecule comes and bind either on the membrane receptor or it goes directly inside the cell if it is lipid soluble and it binds to the internal receptor and goes to the DNA for making the required changes. So ये जितना भी signal transduction का mechanism है, the same theory also applies on growth factors. See, our cells grow and some of them grow for the whole life. Some of them have a limited growth capacity. So for example, when you are born, you are a very little small teeny weeny child, but then your bones grow and your muscles grow and different organs of your body grow. So in order for a cell to grow, there has to be a receptor and some sort of protein molecule, which is what we call growth factor. It needs to come and bind to the receptor and then the process of protein synthesis, जो भी protein हमें required होंगी, that process will be initiated and your cells will grow. Okay, and this growth will obviously mean multiplication of the cell, increase in number of the cells, increase in size of the cell and all those sort of things. So is heading mein, is topic mein, today we have to discuss about what are the important growth factors that you need to remember and what sort of receptors they have. Okay, so a major role of growth factor is to stimulate the activity of the proteins that are required for cell survival, cell growth and cell division. So you see there is cell division, multiplication, एक cell से दो cell survival ताकि cell dead ना हो, and also the cell growth, increasing the size of the cell. So all these things are under the domain of the growth factor. So some protein molecule will bind to the receptor and will induce the protein expression changes, because पूरा गेम यही आपको पता है कि रिसेप्टर पे ligand ने बाइंड करना है और वो फिर अंदर सेकंड मैसेंजर एक्टिवेट होगा या डायरेक्टली जो भी ligand है वो सेल के अंदर आ जाएगा if it is lipid soluble and it directly goes to the DNA पे बाइंड करने का फिर पर्पस ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है यानी फॉर्मेशन ऑफ RNA वो ये जो भी फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, दे कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोटीन, बिकॉज आरएनए फिर अल्टीमेटली क्या बनाएगा, प्रोटीन. एंड बाय मॉड्यूलेटिंग द टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट यू मेक, यू चेंज द होल गेम ऑफ द सेल. यानी अगर आप ऐसी प्रोटीन प्रोड्यूस करवा रहे हैं जो डेथ पाथवे को एक्टिवेट करती हैं, तो सेल विल डाई. But if you are making the proteins which are important for survival, then the cells survive. And if you are making proteins which are important for cell proliferation, तो ये cell will divide. So it's all about what proteins you are making, and the protein expression is dependent upon what RNA you are making, and the RNA transcription is dependent upon how the receptor and ligand complexes are binding to the DNA. Okay? So growth factors are one of the protein molecules basically, या इसको आप ligand कह सकते हैं, which come from the blood, कहीं ना कहीं से रिलीज हो रहा है और वो आकर के अल्टीमेटली सेल के रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है और ग्रोथ करवा रहा है, और इनफैक्ट ये सब चीजें करवा रहा है. ग्रोथ भी करवाता है, सर्वाइवल एंड डिवीजन ऑफ द सेल. सो सेल्स डिवाइड, दे रेप्लिकेट, they grow and they survive, they are alive. Okay, तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो ये सारे काम करवाते हैं, these protein molecules जिनको जनरली आप प्रोटीन मॉलिक्यूल या ligand कहते हैं, now we call them growth factors. Okay, now growth factor activity is mediated through binding to specific receptors, यानी रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे. ये बात अब आपके लिए न्यू नहीं है, you understand this. Ultimately influencing the expression of genes, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूँ. और वो जीन्स क्या क्या करती हैं, they promote the entry of cell into the cell cycle, ताकि सेल डिवीजन हो. सेल साइकिल अभी हम पढ़ेंगे अगली किसी वीडियो में, इसी चैप्टर में. द पर्पस ऑफ द सेल साइकिल इज कि एक सेल से दो सेल बने, सेल डिवीजन हो. सो वो जो भी प्रोटीन्स यहाँ ग्रोथ फैक्टर बनवाएंगे, दे विल नंबर 1 प्रमोट सेल डिवीजन, नंबर 2 रिलीव ब्लॉक ऑन सेल साइकिल प्रोग्रेशन. यानी अगर कोई चीज सेल साइकिल को ब्लॉक कर रही थी तो ग्रोथ फैक्टर्स उन चीजों को खत्म करेंगे. और ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिकल है, क्योंकि अगर सेल साइकिल ब्लॉक करने वाली चीजों को ब्लॉक नहीं किया गया, क्या जुमला है, सेल साइकिल ब्लॉक करने वाली चीजों को ब्लॉक नहीं किया गया तो सेल साइकिल होगा नहीं ना. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो दे गेट द सेल अवे फ्रॉम ऑल द ब्लॉकर्स ऑफ सेल साइकिल. नंबर 3, these growth factors prevent apoptosis. apoptosis का मतलब है सेल जाएगा towards the death pathway और auto programmed
pathways के through the cell will die. लेकिन अब ग्रोथ फैक्टर्स आ गए हैं. जब ग्रोथ फैक्टर्स आ जाएंगे तो सेल डेथ नहीं होगी, यानी एपोप्टोसिस को स्टॉप किया जाएगा. एंड नंबर 4 इज द ग्रोथ फैक्टर्स इनहेंस द बायोसिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर मदर सेल्स टू गिव राइज टू डॉटर सेल्स. सो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये एक्चुअली लिंक्ड है फर्स्ट पॉइंट के साथ, जिसमें सेल रेप्लिकेशन की बात हो रही है. अब देखिए, जब कभी एक सेल को रेप्लिकेट होना होगा, सो दिस इज अ सेल फॉर एग्जांपल, इट हैज टू मेक नाउ 2 सेल्स. इस सेल के पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसके पास कुछ राइबोसोम्स हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जेनेटिक मटेरियल है. अब जब इसको डिवाइड होना होगा, सो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नीड्स टू बी हाई, डीएनए मटेरियल नीड्स टू बी डुप्लीकेटेड, ताकि एक सेट इसमें चला जाए और एक सिमिलर सेट इसमें चला जाए. सो द पॉइंट इज द सेल हैज टू प्रिपेयर फॉर डिवीजन, और ये प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन के लिए प्रोटीन्स चाहिए होंगी, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी सेल में बननी है अल्टीमेटली दैट हैज टू बी मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के लिए आरएनए बनना पड़ेगा, और आरएनए बनने के लिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होनी पड़ेगी, और ये काम करवाते हैं ग्रोथ फैक्टर्स. सो ग्रोथ फैक्टर्स की एक्चुअली मैं कहता हूँ कि 3 डोमेन्स हैं. जो चौथा डोमेन है इट इज एक्चुअली लिंक्ड टू पॉइंट नंबर 1, ये इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है. और वो 3 डोमेन्स क्या हैं ग्रोथ फैक्टर्स के? पहला, ग्रोथ फैक्टर सेल को डिवाइड करवाते हैं. दूसरा, ग्रोथ फैक्टर्स सेल को लाइव रखते हैं, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवाते हैं. और तीसरा, ये जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं ये सेल को ब्लॉकर से, यानी सेल साइकिल ब्लॉकर से बचा के रखते हैं. सो ब्लॉकर्स आर ब्लॉक्ड. ओके, एंड ऑब्वियसली द सेल ग्रो बिकॉज सेल हैज टू गो इनटू द डिवीजन मोड. तो सेल की ग्रोथ भी होगी, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी, एंड न्यू सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड. ओके, सो रिमेंबर दिस इज द आउटलुक ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स. ओके, अभी हम देखेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके लिए बॉडी में ये सारे काम करते हैं. Although some growth factors are proteins that just stimulate cell proliferation or survival, it is important to remember that they also can drive a host of other activities including cell migration, cell differentiation, synthetic capacity of the cell. So they perform many functions. ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं, these are the primary functions, but they also are important for cell migration. Okay? Now, growth factors can be involved in the proliferation of cells at a steady state as well as after injury, when irreversibly damaged cells must be replaced. So their job, the growth factors, they are not only important for your routine physiological processes. यानी अगर एक छोटा सा बेबी ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ फैक्टर्स उसमें एक्ट कर रहे हैं, लेकिन they are also important for pathological stuff. So if somebody has got an injury, liver में injury है, कहीं भी injury है, growth factors also perform their role there. Okay, so they are physiological as well as pathological role players. Uncontrolled, now listen, this is very important. ये सेल की ग्रोथ करवाते हैं but in a very very controlled fashion. अगर ये सब कुछ अनकंट्रोल्ड हो जाए then you will get tumor, because now you have a lot of cells and many of the cells will have mutations. So if this is uncontrolled, it can result in activation of proto-oncogenes and ultimately tumor can be formed. The following discussion summarizes selected growth factors, कुछ की हम बात करेंगे, that are involved in the important proliferative process of tissue repair and regeneration. By virtue of their proliferative effects, proliferative का मतलब है cell division effect, यानी इन सब की वजह से सेल डिवाइड होंगे. They can also drive tumorigenesis. ये इंपॉर्टेंट है. देखो, अगर नॉर्मल हो रहा है तो सेल 1 से 2 बनेगा, लेकिन अगर persistently growth factors रिलीज हो रहे हैं बॉडी में, then guys it will be a problem, because 2 से 4, 4 से 8 uncontrolled सेल डिवाइड होते जाएंगे and you will get increased number of cells which you actually don't want, और इस increased production of cells ही को तो हम कैंसर कहते हैं. This is what is known as tumor. Okay, so ये जितने भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं they have a capacity, अगर नॉर्मली काम कर रहे हैं तो that's fine, लेकिन अगर ये पैथोलॉजिकल हो जाते हैं then they all have the capacity to become malignant factors. It's an important point. Okay, अब हम करेंगे ये कि कुछ 5-6 इन्होंने ग्रोथ फैक्टर्स के नाम दिए हैं और फिर एक टेबल बनाया है, and that is a super important table for you. So if you remember this table you are fine. We will also read the text, we will also go through the table. So for example, यहाँ इन्होंने देखें कितने ग्रोथ फैक्टर्स लिखे हैं. पहला एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, दूसरा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, अक्सर इसका नाम बच्चे लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ फैक्टर, बट दैट्स रॉन्ग, इट्स ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा, TGF alpha. Third is hepatocyte growth factor. You have an idea this works on hepatocytes. Okay, then number 4 is vascular endothelial growth factor, very important, VEGF. Then number 5, platelet derived growth factor, so it's obviously coming from platelets. Okay, number 6, fibroblast growth factors, including acidic fibroblast growth
factor 1 and basic fibroblast growth factor 2. So these growth factors, one is acidic, other one is basic, both belong to this category. Number 7 is transforming growth factor beta. Here it was transforming growth factor alpha. Now we have a beta flavor. And then number 8 is keratinocyte growth factor, which is also known as fibroblast growth factor 7. So 8 इन्होंने नाम दिए. There are more than literature अगर आप देखें, so you'll find more than 25-30 growth factors, but these are in the textbook and you must remember them. बाकियों का ना भी याद रहे, ये याद हो. ये ना हो कि आप वो नाम बता रहे हो जो टेक्स्ट में नहीं है, and you can't do that. So you must remember all these, okay? अब इनकी सोर्स आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्रोथ फैक्टर निकलता कहाँ से. For some of them you have an idea. So for example, epidermal growth factor. So it was initially identified from the keratinocytes. So cells of epithelium, that's why they were named as epidermal growth factor. But इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ keratinocytes से ही निकलते हैं. They are also released from so many other cells, such as macrophages, such as salivary glands, and so many other cells. इसी तरह transforming growth factor alpha from macrophages, so ये भी immune cells से निकल रहा था, ये भी keratinocytes, again the same thing. And then transforming beta को जरा देख लें, platelet से निकलता है. Lymphocyte, macrophages, keratinocyte. So many of them are actually coming from immune cells. So immune cells are important for your cell growth, by the way. Okay. Then hepatocyte growth factor, obviously from the liver cells. And there are also fibroblast and endothelial cell. Vascular, ये blood vessels बनवाएंगे. Vascular endothelial growth factor. And they come from mesenchymal cells wherever they are present in your body. Platelet derived growth factor comes from platelet, but also other immune cells and keratinocytes. Okay. So that's how you have to study. You need to remember the growth factor. You need to remember कहाँ से वो निकल रहे हैं. And then obviously what is their job? So epidermal growth factor का काम क्या है? It is mitogenic. Mitogenic का मतलब है एक सेल को ये डिवाइड करवाएगा दो सेल्स में. So one cell will be divided into two cells. Mitosis. किन की mitosis? Keratinocytes की mitosis. Fibroblast की mitosis. केराटिनोसाइट्स की माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू. जब टिश्यू रिपेयर होता है तो दैट इनिशियल जो वुंड है, that gets a lot of blood vessel and immune cell, and we get a very healthy tissue which is called granulation tissue. और इसके बनने में epidermal growth factor is key component. So that's the way to go through this particular table. और यही सारा आगे टेक्स्ट में लिखा हुआ है. So you need to know the growth factor, you need to know उसकी source, and you need to know वो करता क्या है, उसका function क्या है. So transforming growth factor, for example, is very important for hepatocyte proliferation. Okay, and also some other epithelial cells. Hepatocyte growth factor का तो काम ही होगा hepatocyte and other epithelial cells. VEGF is very important for proliferation of endothelial cell in the blood vessel. Okay. The PDGF, chemotactic for neutrophils, so inflammation में इसका important role है, and it also stimulates extracellular matrix protein synthesis. So go through the table, and this is very self-explanatory. Spend a few minutes there, try to remember what is written, and then we start reading. So now, अब जितने भी नाम मैं पढ़ूंगा, you are familiar with them because you know ये हम देख चुके हैं. You know what is epidermal growth factor, कहाँ से निकलता है, उसकी सोर्स क्या है, उसके फंक्शन क्या है. This is all is written here as well. So both these factors, epidermal growth factor and transforming growth factor alpha, एक साथ combine कर दिया है. They belong to a broader family which is called epidermal growth factor family and bind to the same receptor, explaining their shared biological activity. So if you look at epidermal growth factor and transforming growth factor alpha, they are both released from macrophage, they are both released from keratinocyte, and they have almost similar functions, okay, because they have similar structure. Now EGF, which is epidermal growth factor, and transforming growth factor alpha, are produced by the macrophages. ये हम पढ़ चुके हैं. Now that's the beauty of reading the table first, because now you understand everything. The EGF receptor family includes 4 membrane receptors with intrinsic tyrosine kinase activity. Now this you should know because हम signal transaction कर चुके हैं. यानी एक सेल होगा और सेल मेम्ब्रेन के पास हो रहा होगा, there will be an intrinsic component. जैसे ही इसमें growth factor आके attach होगा, epidermal growth factor या transforming growth factor alpha, the intrinsic portion of the receptor will have a tyrosine kinase activity, and this tyrosine kinase activity हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, और इसकी बेस्ट एग्जांपल है EGFR, which is also known as ERB1, और ये EGFR कई ट्यूमर पाथवेज में एक्टिवेटेड होता है. मैंने आपको बताया कि अगर ये फैक्टर्स, ये सोल्जर्स है ना, अगर ये सोल्जर्स बैंकरप्ट हो जाएं फॉर एग्जांपल, सो दे विल बी अ वेरी बैड रिसोर्स. यू नो, कई मूवीज में हमने इस तरह की देखी हैं कि इनिशियली द पर्सन वाज द सोल्जर एंड देन द सोल्जर वाज देन मिसहैंडल्ड एंड दिस कन्वर्टेड इनटू अ डेंजरस पर्सन. ओके, सो इसी तरह ये भी ऐसे ही हैं. दे आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, दे परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन, बट इफ दे आर म्यूटेटेड और इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम एंड दे स्टार्ट फंक्शनिंग कंटिन्यूअसली without any control, then tumor will be formed in the body.
Okay, EGFR mutations, for example, leads to a lot of cancer such as breast cancer, head and neck cancer, and brain cancer. किसी भी growth factor की mutation से cancer हो सकता है. Okay, to treat malignancies, many of these receptors have been successfully targeted by antibodies, and so if there is a cell और इस सेल पे EGFR for example बहुत ज़्यादा एक्शन कर रहा है और उससे ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, so one idea would be to block this receptor ताकि EGFR काम ही ना करे और कैंसर सेल ग्रोथ ना हो. So that's the concept there. Okay, then we have hepatocyte growth factor. ये भी आपने टेबल में ऊपर स्टडी किया, देखा. The hepatocyte growth factor has mitogenic effect on hepatocyte, यानी hepatocyte को डिवाइड करवाएगा and many other epithelial cells. Hepatocyte growth factor act as a morphogen during embryonic development में भी इसका रोल है for differentiation of different tissues. It promotes cell migration and it enhances the hepatocyte survival. All understandable. Hepatocyte growth factor is produced by fibroblast and most mesenchymal cells as well as endothelium and non-hepatic liver cells. So these are the origins. It is synthesized as an inactive precursor, like many different proteins in the body are synthesized in this way, and it is proteolytically activated by serine proteases released at the site of injury. So wherever इसका function चाहिए वहाँ पे serine proteases release होते हैं, वो इस pro form को convert कर देते हैं active form में. Consequently, MET inhibitors are being evaluated in cancer. So all of them are associated with formation of cancer mutations अगर इनमें हो, and therefore they are targets for anti-cancer therapies. Then we have another category of growth factor called the platelet-derived growth factor. It's a family of several closely related. There's so many different proteins in this particular family, and three isoforms AA, AB, and BB are constitutively active, while CC and DD must be activated by. So that's a piece of information. If you want to remember, it's okay. If you don't, doesn't matter. Platelet-derived growth factor is stored in the platelet granules. So इसकी major source ये है, ठीक है? Baki, what they do is also very nicely summarized all in here. So that's the easy bit. If you go through the table, you are good with the text. Now, the VEGF, इसके different flavors हैं, protein की different types हैं, VEGF A, B, C, and D, and also the placental growth factor, which is PIGF, are family of homodimeric proteins. VEGF A is generally referred to simply as VEGF. तो A, जब VEGF कह रहे होते हैं तो basically it means VEGF A. And it is important for formation of blood vessels. किसी भी साइट पर अगर wound है या कोई भी even tumor है, so tumors for example produce a lot of VEGF tumor cells ताकि यहाँ पे blood vessels बने और tumor को nutrition मिलती रहे. So you see all these growth factors, if they go bankrupt, they will help the process of tumor formation. Okay, so some of them help in the formation of blood vessels. They also help in the formation of lymphatic vessels. VEGF are also involved in maintenance of the endothelial cell lining of the mature cell. Its expression is highest in epithelial cell adjacent to the fenestrated epithelium. So they're all associated with blood vessels. Okay, it also induces vascular dilation and increased vascular permeability. VEGF, therefore, important role to play in inflammation. As might be expected, hypoxia is the most important inducer for VEGF. So imagine it this way. If there is a tumor group of cells, अब इतने सारे हो गए तो इनको ऑक्सीजन कम पड़ रही है, they are undergoing the status of hypoxia. What they do is the tumor cell start producing VEGF, और ये VEGF यहाँ नई blood vessel बनाता है कि ले भाई टेंशन ना ले, तेरी ऑक्सीजन कम हो रही है ना, more blood vessels, more oxygen. So hypoxia is an important factor for the production of VEGF. Okay, and basically it works through the HGF1 pathway, which is hypoxia inducible factor. So hypoxia होगा, ये प्रोटीन निकलेगा, ये प्रोटीन VEGF को एक्सप्रेस करवाएगा. That is the sort of story. That VEGF binds to a family of receptor which are tyrosine kinase activity of receptors, and VEGF2 ये receptor के categories हैं. VEGF R1, 2 and 3. R means receptor. VEGF का receptor है इसलिए VEGF R. Okay, they're highly expressed in the endothelium, and you would assume so because VEGF is going to work on the blood vessels. So blood vessels must have receptor for this. Okay. Right, antibodies against VEGF are approved for treatment of several tumor. There you go. You see, all of them, if go bankrupt, can cause cancer, and then you need to block them. So there are many blocking agents approved for VEGF. Anti-VEGF antibodies are also used for treating many tumors. Finally, increased levels of soluble versions of VEGF R1 in pregnant women may contribute to preeclampsia. So that's one of the recent studies. You just need to remember that, okay? They also contribute in eclampsia and preeclampsia in pregnant ladies.
Another growth factor is the fibroblast growth factor. Then we have transforming growth factor beta. So fibroblast growth factor is a family of growth factor with more than 20 different members. There are so many different names, acidic, basic, and so on and so forth. But you need to remember they are very important in wound healing and hematopoiesis, and also during embryogenesis. Okay, they also contribute a little bit to angiogenesis, yani blood vessel formation, along with the main player of blood vessel formation, which is VEGF. Then we have transforming growth factor beta. It has 3 isoforms known to date: beta 1, beta 2, and beta 3, and they all belong to a family with about 30 different members, including BMPs, which are very important for development, and inhibins and Mullerian inhibiting. You can just imagine by the names, this is something to do with embryology, because male and female gender differentiation, Mullerian inhibiting substances, activins, BMPs, they are all important in embryology. So they are very, very important for embryological development. Okay, many of them are homodimeric proteins produced by multiple cell types, including platelets, endothelium. ये भी ऊपर टेबल में हमने देख लिया था. और इनकी जो रिसेप्टर्स हैं, 2 कैटेगरीज हैं, एंड बोथ ऑफ देम आर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज एक्टिविटी टाइप ऑफ रिसेप्टर्स. ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था सिग्नल ट्रांसडक्शन में कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिसेप्टर्स. ओके, एंड दे इंड्यूस फॉस्फोराइलेशन ऑफ सेवरल प्रोटीन्स एंड also transcription factors such as SMADs, and ultimately they go to the nucleus and do about the changes of proteins. Okay, और कौन-कौन सी proteins affect होती हैं? Matrix metalloproteinases. So you can have an idea that these are the proteins which will break down the matrix, and the cell invasion and migration will be facilitated. Okay, also the tissue inhibitors of proteinases. So both these they together work for cell migration. TGF-beta also applies brakes to inflammation. So that's an anti-inflammatory protein. So many of the proteins you have studied, बहुत सारे नाम आपको पता होंगे, those are actually pro-inflammatory. They bring about neutrophils, infiltration, they bring about release of cytokines, but very few of the proteins in your body are actually there to stop the inflammation. And one of the key factors is TGF-beta. So must remember stuff for TGF-beta, okay? It accompanies wound healing, because आपको inflammation किसी स्टेप पे रोकनी होगी. वरना अगर inflammation continuous रही तो ये theory है कि chronic inflammation से actually cancer हो सकता है. I mean, take an example of gastric cancer. So gastric cancer उन लोगों में ज़्यादा common है जिनको H. pylori infection हर वक्त है. So active H. pylori infection means a lot of inflammation, means a lot of gastric cancer. Oral cancer की example लें. Those who consume a lot of pan, gutka, chalia have chronic inflammation leading to oral cancer. Take an example of colon cancer. So colon cancer, अगर किसी को colitis है, ulcerative colitis या Crohn's disease can lead to cancer because there is chronic inflammation. So we have a lot of evidence कि जहाँ बहुत देर तक untreated inflammation hogi, it will ultimately lead to cancer. So we need to, the point what I'm trying to convey is the fact that you have to stop the process of inflammation at some point, because inflammation is not always good. Okay, it's good initially, it has to harness the insult, लेकिन कुछ अरसे के बाद you have to stop it, वरना कैंसर हो सकता है. So stop करने वाले मॉलिक्यूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं भाई. TGF-beta is very important because it stops inflammation. Okay, so what we discussed today is extremely important because we talked about at least 8 growth factors, उनके receptors और उनके functions. और इन सब के बारे में एक general rule ये है कि they are good because ये 3 काम करवाते हैं, cell division करवाते हैं, cell को alive रखते हैं, और they are very important for growth of the cell. लेकिन आपको ये बात भी मैंने बताई बार बार कि अगर ये growth factors uncontrolled express होते रहेंगे तो ये कैंसर करवा सकते हैं. और बहुत सारी कैंसर की जो थेरापीज हैं वो इनके अगेंस्ट डायरेक्टेड है कि भाई इनको रोको ताकि सेल ग्रोथ रुके. ओके, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल. आपकी पूरी लाइफ में आपको काम आने वाला है. ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अब अपना ख्याल रखो और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे. टेक केयर.